Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Admission of a New Partner. Starting today's class with illustration 5. Let us discuss. Illustration 5 में basically अपने को new profit sharing ratio calculate करना है under different situations. तो एक एक करके discuss करते कि writing हाँ. A and B are in partnership. So A and B are two partners. Sharing profits and losses in the ratio 3:2. So that is their old PSR. Old PSR is a 3:2. They take C as a new partner. So C is admitted as a new partner. Calculate the new profit sharing ratio, that is NPSR if Roman 1, C purchases 1 by 10 share from A. C purchases means C gets 1 by 10 share in profits from A. So C gets how much share? 1 by 10. And ये 1 by 10 A को C को किससे मिला है? A से मिला है. तो A का न्यू शेयर क्या होगा आफ्टर C's एडमिशन? एडमिशन से पहले A का old share was 3 by 5. Old PSR was 3:2. So A's old share was 3 by 5, जिसमें से A ने 1 by 10 C के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है. तो अपने ओल्ड शेयर में से C ने 1 by 10 सैक्रिफाइस किया फॉर द न्यू पार्टनर. So after admission of C, A's new share in the profits will be, tell me, 3 by 5 can be written as 6 by 10. 6 by 10 minus 1 by 10 is equal to 5 by 10. B ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया बिकॉज C को जो 1 by 10 मिला है वो केवल A से मिला है. तो B का जो पुराना शेयर, ओल्ड शेयर 2 by 5 था, एज इट इज मेंटेन रहेगा इवन आफ्टर एडमिशन ऑफ C. तो B's न्यू शेयर will be 2 by 5, that is 4 by 10. So न्यू शेयर A, B and C का कितना हुआ? A का न्यू शेयर इज 5 by 10, B का न्यू शेयर इज 4 by 10 and C का न्यू शेयर इज 1 by 10. Keep writing. Okay. So what is the ratio between A, B and C? 5:4:1. So this is the new profit sharing ratio between A, B and C. Understood situation 1? Now the next, it's a different situation 2, Roman 2. A and B, इसको हटा दे. Written? You're writing ना? Now, क्या दिया हुआ है? A and B agree to sacrifice 1 by 10th share to C. तो C का शेयर इज 1 by 10. A and B agree to sacrifice 1 by 10th share to C. C का शेयर इज 1 by 10 और ये 1 by 10 किसने सैक्रिफाइस किया है? A and B agree to sacrifice 1 by 10 share to C. In what ratio? In the ratio 2:3. So A and B ने ये 1 by 10 शेयर C के लिए सैक्रिफाइस किया and the sacrifice is in the ratio 2:3. So tell me, A is a sacrifice. लिखते रहो, नंबरिंग करके लिखना है. Illustration 5 Roman 2. So A is a sacrifice is 1 by 10 का 2 by 5 because जो 1 by 10 A और B ने sacrifice किया है for C, this sacrifice is made in the ratio 2:3. So 1 by 10 का 2 by 5 A ने sacrifice किया. तो A's sacrifice is equal to 1 by 10 का 2 by 5 is 2 by 50. अभी इसको रिड्यूस नहीं कर रहा हूं मैं,
ठीक है, I'm not reducing the fraction in the simplest form right now. We'll do it as per the requirement. Okay. And how much is B's sacrifice? A को जो वन, C को जो 1/10 मिला है, 1/10 का 3/5 B ने सैक्रिफाइस किया, तो B's sacrifice is 3/50. So A's sacrifice is 2/50, B's sacrifice is 3/50. Total sacrifice is 5/50. 5/50 is equal to 1/10, which is C's share. C is a new partner. New partner gains in the share of profit. So C's share is 1/10. So total gain is 1/10. And total sacrifice is 5/50, which is 1/10. So total sacrifice is equal to total gain. Okay. Okay. So हमने sacrifice को निकाल लिया है, but question का requirement क्या है? To calculate new profit sharing ratio. तो सोचो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू शेयर. आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, न्यू शेयर इज कैलकुलेटेड एज ओल्ड शेयर माइनस द सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस मतलब उतना शेयर ए और बी ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से निकालकर सी को ट्रांसफर कर दिया है. तो ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस को माइनस करके वी गेट द न्यू शेयर. तो व्हाट इज ए इज अ न्यू शेयर? लिखते रहो. ए इज अ न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर. ओल्ड शेयर इज 3/5. 3:2 ना. ओल्ड शेयर इज 3/5 एंड सैक्रिफाइस इज 2/50. डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3/5 कैन बी रिटन एज 30/50. 3/5 is 30/50 minus 2/50 is equal to 28/50. Yes or no? 28/50. Correct me if I'm wrong. Now B is a new share. B is a new share is equal to old share 2/5 minus sacrifice 3/50. Now denominator को सेम करने के लिए 2/5 can be written as 20/50. So 20/50 minus 3/50 is equal to 1717/50. So B is a new share is 17/50. And C is a share. C is a share is 1/10. तो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो निकालने के लिए शेयर का रेशियो शुड बी सेम. तो रेशियो सेम करने के लिए डिनोमिनेटर 50 सेम रखेंगे. सो सी का जो शेयर है 1/10 कैन बी रिटन एज 5/50. yes or no? So A is a new share is 28/50. B is a new share is 17/50 and C is a share is 5/50. So NPSR between A, B and C is 28:17:5. Okay, clear है? Next, situation 3, a separate situation. क्या लिखा है इसमें? C simply gets 1/10 share of the profits. ये तो बहुत ही इजी है. कैसे निकालोगे? C का शेयर इज 1/10. तो C को अगर 1/10 शेयर मिल रहा है, व्हाट इज द रिमेनिंग शेयर? 9/10. तो ये 9/10 शेयर कौन बांटेंगे? किसके बीच बटेगा? ए एंड बी के बीच में बटेगा. इन व्हाट रेशियो? इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 3:2. तो लिखेंगे, लिखने से और बेटर समझ में आएगा. लिखो, C's share is equal to 1/10. Therefore, balance share, that is remaining share, is equal to 1 minus 1/10 is equal to 9/10.
क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो अपने क्या समझेंगे कि जो बचा हुआ 9/10 शेयर है, it will be shared between A and B, will be shared between will be shared between A and B in their old ratio, that is in the ratio 3:2. So जो remaining 9/10 शेयर है will be shared between A and B in the ratio 3:2, that is their old ratio. So A का share will be what? 9/10 का 3/5, which is equal to 27/50, and B's new share will be 9/10 का 2/5, which is equal to 18/50. So A's share is 27/50 new share, and B's new share is 18/50, and C का share को अपने 5/50 बोल सकते हैं. 1/10 is equal to 5/50. So what is the ratio between A, B, and C? The ratio between A, B, and C is 27:18:5. Clear है? So basically, computation of new profit sharing ratio will help us in master questions of admission of a new partner. ठीक है? तो ये basically for knowledge purpose है. Now coming to the next illustration, illustration 6. A and B are in the partnership, sharing profits and losses in the proportion 3/4 and 1/4. Means the ratio is 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, यानी बैलेंस शीट के आइटम्स बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, आइटम और उसका अमाउंट बताया हुआ है. ठीक है? तो एक बार मैं एज अ स्टूडेंट में क्या करूंगा, आई विल चेक टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज और नॉट. सो एसेट में कैश 1000, कैलकुलेटर में ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस 25,000 एसेट है, सारे एसेट्स का टोटल कर रहे हैं. इन्वेंट्री 22,000 इन्वेंट्री एड, प्लांट एंड मशीनरी 4,000. So total asset is coming to 52,000. Then compute total liabilities, trade payables 12,000, bank overdraft 15,000 add करो. कैपिटल भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आता है, तो कैपिटल अमाउंट को भी जोड़ो साथ में. A's capital 15,000, B's capital 10,000. So liability side का total is coming to 52,000. It means all the items of the balance sheet is present. Okay. Perfect. Now, on 1st April 2022, they admitted C into partnership on the following terms. So what are the terms on which C has been admitted into partnership? C to purchase 1/3 of the goodwill, which means C's share in the profit is 1/3. So C to purchase 1/3 of the goodwill for rupees 2,000. So tell me, this 2,000 is what? C's share of goodwill or goodwill of the firm? C's share of goodwill. And what is C's share in the profits? 1/3. So for 1/3 share in the profits, C's share of goodwill is 2,000. So on this basis, can you tell me what will be the value of goodwill of the firm? 6,000. 1/3 is 2,000. So the full value of goodwill of the firm is 6,000. Okay. And provide 10,000 as capital. Goodwill not to appear in the books. ये अपने को पता है, goodwill does not appear in the books because
पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के यूनिट में हमने कहीं पर भी गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं रखा था, ठीक है, ये सोनो। सो ये खाली ऐसे ही। ओके, सो सी इज अ शेयर ऑफ गुडविल इज 2000 एंड सी capital contribution is 10,000. Okay, future profits and losses are to be shared by A, B and C equally, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. So let us first compute the sacrifice by the old partners. How do we compute the sacrifice? Old share minus new share. So let us now compute A is a sacrifice. लिखते रहो, illustration 6. A's old share is 3 by 4. Yes. And A's new share is 1 by 3. So what is the sacrifice? 5 by 12. Please check. 5 by 12. A's sacrifice is 5 by 12. Now calculate B's sacrifice. Let's see. Old share is 1 by 4 and new share is 1 by 3. B's sacrifice जब हम निकाल रहे हैं तो -1 by 12 आ रहा है, which means what? B is gaining. This is B is a gain. This is B's gain. This is B's gain. यानी admission के बाद one of the existing partner B is also gaining in the share of profits along with the new partner C. C तो नया पार्टनर है, एडमिशन हो रहा है तो उसको तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही। तो B is the gain is equal to 1 by 12 लिखो। C is the new partner, तो C is the gain is equal to, उसका तो टोटल शेयर इज गेन, न्यू पार्टनर एडमिशन 1 by 3 is equal to what? 4 by 12. Now check, total gain is equal to total sacrifice. B is also gaining, B's gain is 1 by 12. C is a new partner, तो उसका total share is gain 4 by 12. So total gain B plus C is equal to 1 by 12 plus 4 by 12 is 5 by 12. So total gain is 5 by 12. ये 5 by 12 किसने sacrifice किया है? A ने sacrifice किया है. A's sacrifice is 5 by 12. Very nice. Upal is saying that C तो compensation देगा ही, साथ में B भी compensation देगा. How? Through treatment of goodwill. C तो compensation देगा ही A को, साथ में B को भी compensation देना है for his gain through treatment of goodwill. ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जैसे C के कंपेंसेशन के लिए C अपना शेयर ऑफ गुडविल 2000 लेकर आ रहा है। दिस 2000 इज C's शेयर ऑफ गुडविल। ये पूरा अमाउंट किसको चला जाएगा? A को, ठीक है। तो 2000 के लिए क्या एंट्री पास होगा? भी लिखना मत। 2000 के लिए क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें कैश है तो वी से कैश अकाउंट, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, सो बैंक अकाउंट डेबिट 2000 to A's capital 2000. Okay, so for C's share of goodwill, the entire amount will go to A because A ने ही total sacrifice किया है। तो C अपना share of goodwill 2000 लेकर आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 to A's capital 2000। अब B को भी compensation देना है, तो B का शेयर निकालेंगे अपने, ठीक है ना। B ने कितना गेन किया है?
1/12 गेन किया, तो गुडविल ऑफ द फर्म का 1/12, अंडरस्टैंड, गुडविल ऑफ द फर्म का 1/12 B will compensate to A. तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल ऑफ द फर्म हमने कितना निकाला था? 6,000. Because C's share is 1/3, and for 1/3 share, C brings in rupees 2,000 as his share of goodwill. So 1/3 के लिए 2,000. So full amount of goodwill of the firm is equal to 6,000. 2,000 divided by 1/3 is equal to 2,000 into 3/1, which is equal to 6,000. So goodwill of the firm is rupees 6,000. And B ने कितना gain किया 1/12? So 6,000 का 1/12, 500. 6,000 का 1/12, 500. B will compensate to A. तो इसके लिए एंट्री पास होगा B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट. जब भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो वो कॉम्पेंसेट करेगा थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट. नया पार्टनर के केस में दो ऑप्शन होता है. वन इज नया पार्टनर, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. नंबर टू, द न्यू पार्टनर कैन, the treatment of goodwill for the new partner can be made through capital adjustment. So नए पार्टनर, न्यू पार्टनर के केस में the new partner can bring his share of goodwill in cash, premium for goodwill, or the treatment of goodwill can be made through capital adjustment. But when an existing partner gains in share of profit, so in that case treatment of goodwill is made through capital adjustment. Okay, clear? तो क्या मैं लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा. सो B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, राइट. सो B के कैपिटल अकाउंट में से हम लोग कितना काट लेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म 6,000 है, एंड C ने कितना गेन किया? 1/12. 6,000 का 1/12 B will compensate to A. 6,000 का 1/12 is 500. 500 B will compensate to A. तो B के कैपिटल अकाउंट में से काटकर हम A के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे. बोलो बेटा. हम्म हम्म टू परचेज. चलो आ जाओ, लिखो. करेक्ट, लिखो. राइट. अब लिखो इलस्ट्रेशन 6. अच्छा, ये सैक्रिफाइस का वर्किंग नोट आपने दे दिया था. ठीक है, दिस इज नोट 1. नोट 1 दे दो इसको. ये नोट अपने लिख दिए, नोट 1. डन. ओके, नाउ नोट 2 में आ जाओ. वेरी नाइस. नहीं, उसको तो फिर जनरल एंट्रीज में लिखा देंगे ना. एक्स्ट्रा वर्किंग नोट क्यों देना है? नहीं. गुडविल ऑफ द फर्म is equal to 2,000 divided by 1/3, that is 2,000 into 3/1 is equal to rupees 6,000. ठीक है. नाउ जर्नल एंट्रीज पास करना है इसमें. सो पहले तो for C's capital contribution, how much has C contributed as capital? Rupees 10,000. Write down the entry. Bank account debit 10,000 to C's capital.
10,000. Then for C is a share of goodwill. Bank account debit 2,000. To A's capital 2,000. Then for B is a share of goodwill. B's capital account debit to A's capital. Brackets में you show the calculation. 6,000 into 1 by 12, 500. Done. Okay. इससे एक चीज पता चला, क्या पता चला? Even in case of admission, one of the existing partner can also gain in share of profit for which he needs to compensate to the partner who is sacrificing. And that is done through treatment of goodwill through capital adjustment. Okay, चलो नेक्स्ट. तो रोमन 1 का जनरल एंट्री हमने पास कर लिया है. रोमन 2 से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रोमन 2 में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था जिससे हमने सैक्रिफाइस को निकाला, तो पता चला बी ने सैक्रिफाइस नहीं गेन किया है, तो बी को कॉम्पेंसेट करना है टू ए, तो उसका जनरल एंट्रीज हमने पास कर दिया 500 के लिए. अब 3 में आ जाओ. 3 is revaluation. Plant and machinery is reduced by 10%. Revaluation account debit to plant and machinery account. Plant and machinery का asset balance sheet में amount is 4,000. 4,000 का 10% is 400. So revaluation account debit to plant and machinery 400. Rupees 500 is to be provided for estimated bad debts. Estimated bad debts means you need to create provision. So revaluation account debit to provision for bad debts 500. Inventory is to be taken at a valuation of 24,940. Inventory का valuation कितना दिया हुआ है? यानी inventory के valuation में there is increase, so it is revaluation gain. तो इसका अलग से एंट्री पास होगा. ठीक है, तो पहले हम क्या एंट्री पास करेंगे बोलो? As you were saying, tell me. Revaluation account debit. Revaluation account debit to plant and machinery. How much? 400. Then इसी में कंबाइन कर रहे अपने to provision for bad and doubtful debts 500. So revaluation account debit 900. Okay. Then inventory is to be taken at a valuation of 24,940. So revalued amount is 24,940. And before admission, the book value was 22,000. So there is a revaluation gain of 2,940. 2,940. 2,940. So entry will be inventory account debit to revaluation account. How much? 2,940. 2,940. Inventory account debit to revaluation account 2,940. Anything else in revaluation? No. रोमन 4 को अपने रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे वेट. सो रोमन 3 इज ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन एंड इसके बाद कोई रिवैल्यूएशन का इंफॉर्मेशन नहीं है. सो दिस इज ऑल इन रिवैल्यूएशन. So now we can calculate revaluation profit. The revaluation profit is 2040. Revaluation account credit हुआ 2940 से, debit हुआ 900 से. So there is revaluation profit of
2040, जो कि हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. So for distributing revaluation profit between the old partners, we credit the old partners capital account and debit the revaluation account, जिससे revaluation account क्लोज हो जाएगा. ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी है, जिनके बीच रेशियो ओल्ड पीएसआर इज 3:4. सो revaluation account 2040, revaluation account debit 2040 to A's capital 2040 into 3/4 to B's capital 2040 into 1/4. कैलकुलेट करके बताओ. 2040 into 3/4, 1530, and 2040 by 4, 510. हुआ? क्लियर है? So revaluation profit is distributed between the partners in old PSR, जिसके लिए एंट्री पास हुआ revaluation account debit to A's capital to B's capital, and revaluation account is now closed. ठीक है. Now Roman 4 में आ जाओ. By bringing in or withdrawing cash, bringing in means cash लाकर, withdrawing means cash निकालकर, the capitals of A and B, capitals of old partners A and B, are to be made proportionate in the same proportion to that of C on their profit sharing basis. मतलब क्या? C का profit sharing is how much? 1/3. So for 1/3 share in the profits, what is the capital contribution of C? 10,000. After admission of C, profits and losses are to be shared by A, B and C equally. Yani A's share is 1/3, B's share is also 1/3. तो बताओ, 1/3 शेयर के लिए अगर C का कैपिटल अकाउंट में 10,000 है, सो A और B के कैपिटल अकाउंट में भी 1/3 शेयर के लिए 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स के लिए कैपिटल अकाउंट में 10,000 होना चाहिए. सो अगर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स के लिए C के कैपिटल अकाउंट में 10,000 है, तो इस हिसाब से तो A एंड B, A का शेयर भी 1/3 है, B का शेयर भी 1/3 है. सो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस CD 10,000 होना चाहिए. परफेक्ट. Yes. Right. So closing balance of A's capital account C by D 10,000 होना चाहिए. Closing capital balance of B should also be 10,000, because end में क्योंकि तीनों का इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स है, एंड C का शेयर 1/3 के लिए वो 10,000 का कैपिटल, C का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 10,000 है, तो A एंड B के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी 10,000 होना चाहिए. यानी A एंड B के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस शुड बी 10,000. सो क्लोजिंग बैलेंस शुड बी 10,000. तो क्लोजिंग बैलेंस 10,000 रखने के लिए या तो पार्टनर्स कैश लेकर आएंगे, अगर 10,000 से उनका कैपिटल बैलेंस कम हुआ तब, यानी इन केस ऑफ डेफिसिट, या फिर पार्टनर्स कैपिटल में से कैश को विड्रॉ कर लेंगे अगर उनका एक्चुअल कैपिटल बैलेंस 10,000 से ज्यादा हुआ तब. क्योंकि एंड में अपने को तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 10,000 का मेंटेन करना है,
तो ए और बी के केस में जिस भी पार्टनर का एक्चुअल कैपिटल बैलेंस 10,000 से कम हुआ तो वो डिफरेंस अमाउंट इन कैश लेकर आएगा, ही शैल ब्रिंग इन कैश। या फिर अगर ए और बी में से किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस 10,000 से एक्सेस हुआ तो वो एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर लेगा टू मेंटेन द कैपिटल बैलेंस एट रुपीज 10,000। क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो लेट अस चेक what is the actual capital balance of A. Before admission of C, A's capital account showed a balance of rupees 15,000. So 15,000 को पकड़ के रखो। कैपिटल अकाउंट के लिए रूल क्या है? इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। इंक्रीज मींस प्लस, डिक्रीज मींस माइनस। यानी जो जर्नल एंट्रीज हमने पास किया है उस एंट्री में जिधर भी सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो उस अमाउंट को हम 15,000 के साथ ऐड कर देंगे। एंड जिस एंट्री में ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो उस अमाउंट को हम 15,000 से लेस कर देंगे। क्लियर है ना? सो एज कैपिटल बैलेंस बिफोर सीज एडमिशन इज 15,000. So that is our base amount. Now let us calculate what is the actual capital balance of A after admission of C. तो जो जर्नल एंट्रीज हमने पास किया है, कैपिटल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज यानी प्लस क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज यानी माइनस डेबिट। तो जो जर्नल एंट्रीज हमने पास किया है उस जर्नल एंट्री में जिस एंट्री में ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है उस अमाउंट को हम 15,000 के साथ ऐड करेंगे एंड जिधर ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट है उस अमाउंट को हम 15,000 से लेस कर देंगे। करके वी शैल फाइंड आउट द एक्चुअल कैपिटल बैलेंस ऑफ ए। बोलो। 15,000 कैलकुलेटर में रखा, देन इधर में देखो ये 2,000 क्या करोगे? ऐड, एज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। 500 को ऐड, एज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। देन रीवैल्यूएशन में एज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, ऐड 1530. So A's actual capital balance is 19,030. ठीक है? सो कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करना है? ओनली 10,000. बट A's actual capital balance after C's admission is coming to 19,030. जबकि कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करना है? ओनली ₹10,000. तो व्हाट विल ए डू? ही विल withdraw 9,030. Okay, 9,030 he shall withdraw. तो क्या एंट्री पास होगा? A's capital account debit to bank 9,030. Now let us do the same calculations for B as well. Before admission, B's capital stood at ₹10,000. अभी एंट्रीज में आ जाओ। Here we go. इधर में B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 है, सो माइनस करोगे 10,000। जिस एंट्री में B's कैपिटल अकाउंट डेबिट है उसको 10 माइनस करना है, सो माइनस 500। देन इधर में B's कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड तो प्लस 510।
यानी B's actual capital balance after C's admission is coming to rupees 10,000, 10 rupees. जबकि B को कितना कैपिटल बैलेंस मेंटेन करना है? हाउ मच? 10,000, यानी 10 रुपए का एक्सेस है, तो B 10 रुपया को विड्रॉ कर लेगा. क्लियर? एक टेबल बना रहे अपने. कितना था? 19,000. श्योर. कैसे कैसे आया था? 15,000 प्लस. और ये bring in case of deficit, withdraw सो दोनों जन विड्रॉ करेंगे, सो एंट्री विल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 9030, B's capital account debit 10 to bank account 9040. ओके, क्लियर है? सो set out the entries to the above arrangement in the firm's journal. So journal entries हमने पास कर लिया है. आपका टास्क क्या होगा? गिव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन टैबुलर फॉर्म, मींस कॉलम बनाकर. जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम्स बनेंगे. लेजर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल का लेजर अकाउंट, और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस सी बाई डी 10,000 10,000 10,000 होगा करके. जितना भी एंट्रीज अभी हमने पास किया उसको आप कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करके कैपिटल अकाउंट को बनाकर कंप्लीट करोगे एंड सोल्यूशन से चेक करोगे. क्लियर? ओके, डन. Can we go to the next illustration? Illustration 7. A and B are partners of X LLP Limited Liability Partnership, sharing profits and losses in the ratio 3:2 between themselves.
This is old PSR. On 31st March 2022, the balance sheet of the firm was as follows. So ये balance sheet immediately before admission है. X agrees to join the business on the following conditions as and from 1st April 2022. He will introduce rupees 25,000 as his capital. The bank account debit to X capital and pay rupees 15,000 to the partners as premium for goodwill. So X brings in his share of goodwill in cash for 1/3 share of the future profits of the firm. So X new partners share in the profit is 1/3. B को पढ़ने से पहले क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. Profit and loss adjustment is another name for revaluation account. Adjustment means change. Revaluation से अपने क्या कर रहे हैं, assets and liabilities के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और उस चेंज के कारण there is certain amount of revaluation profit or loss. So that is also called profit and loss adjustment account. So profit and loss adjustment account is nothing but it is another name for revaluation account. But क्योंकि question has used the name profit and loss adjustment account, so आप भी यही नाम से account को prepare करोगे. Capital account of partners prepare करना है including the new partner definitely. हम लोग हमेशा all partners capital account prepare करते हैं including the new partner, assuming that the relative ratios of old partners, यानी old partners के बीच में जो ratio है will be in equal proportion after admission. Old partners कौन है? A and B. तो इनके बीच जो रेशियो रहेगा, relative ratio means इन दोनों पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो रहेगा in relation to each other, they will be in equal proportion. समझ में आया? क्लियर है? यानी आफ्टर एडमिशन ऑफ X, A and B के बीच में the new ratio between A and B only will be 1:1. तो इससे अपने क्या समझे? इससे अपने ये समझे, लिखो illustration 7 लिखो. X's share is how much? 1/3. तो X को अगर 1/3 शेयर मिल रहा है, so the remaining share is equal to 1 minus 1/3 is equal to 2/3. अब ये 2/3 जो है वो A and very good, A and B बांटेंगे in the ratio 1:1. यानी 2/3 का 1/2 A लेगा, लिखते रहो एज इट इज जैसे मैं लिख रहा हूं, एंड 2/3 का रिमेनिंग हाफ 1/2 B लेगा. तो 2/3 into 1/2 is 1/3. Same is the case with B. So A is a new share is 1/3, B is a new share is 1/3, and C is a share is X is a share is 1/3. So A, B, X के बीच में the new PSR is what? 1:1:1. So new PSR निकाल लिया है. Old ratio पता है, old ratio between A and B 3:2. So now we can calculate the sacrifice of A and B. Old PSR is what? 3:2. So let us calculate the sacrifice. A is a sacrifice of the old partners. Old ratio minus new share, 3/5 minus 1/3. 4/15. This is A is a sacrifice. And what is B is a sacrifice?
2 by 5 minus 1 by 3, 1 by 15. So A's sacrifices 4 by 15, B's sacrifices 1 by 15. Total sacrifice of A and B is 5 by 15. 5 by 15 is 1 by 3, which is X's share in the profits. X is the new partner, uska share is 1 by 3. That is the total gain. And total sacrifices 4 by 15 plus 1 by 15 is 5 by 15 means 1 by 3. So total gain is equal to total sacrifice. ठीक है. So sacrifice ही है, P का भी sacrifice ही है. Clear है? तो ये जो 15,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है, 15,000 का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसके लिए क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 लिखो. बैंक अकाउंट डेबिट बोलो 15,000 टू A's capital to B's capital. What is the sacrificing ratio? A's sacrifice is 4 by 15, B's sacrifice is 1 by 15. So what is the ratio of the sacrifice? 4 is to 1. So 15,000 ka 4 is to 1 na? 4 by 5 is equal to how much? 12,000, and B 15,000 into 1 by 5 is 3,000. So premium for goodwill ke liye entry will be bank account debit 15,000 to A's capital 12,000 to B's capital 3,000. Clear? Right? So ये डिस्कस किया. एंड जो X का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके लिए एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल 25,000. बी में पूरा रीवैल्यूएशन का पार्ट है. Revaluation of assets of the firm will be made by reducing the value of plant and machinery to rupees 15,000. प्लांट एंड मशीनरी का बुक्स में कितना वैल्यू है? 20,000. अभी उसको 15,000 में रिड्यूस कर देना है, यानी 5,000 का डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. कीप राइटिंग. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. इन्वेंट्री बाय 10%. इन्वेंट्री बाय 10%. इन्वेंट्री का बुक वैल्यू 15,000 है. 15,000 का 10% इज 1,500. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री 1,500. फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय रुपीज 1,000. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,000. लिखा हुआ है ना. रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग. सो ये सारे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है. And by making a provision for bad and doubtful debts at rupees 750 on trade receivables. Profit and loss adjustment account debit to provision for bad and doubtful debts 750. यानी सभी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हुआ. यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सारे आइटम्स आएंगे, राइट? So profit and loss adjustment account, that is revaluation account के debit side में to plant and machinery 5,000, to inventories 1,500, 1,500, to furniture and fittings 1,000, to provision for bad and doubtful debts 750. So there will be a revaluation loss जिसको हम A और B के बीच में बांटेंगे in the old ratio which is 3:2. Clear? सो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है. दैट इज इट. तो ये दो चीज बनाना है. इजी टू मेक, इजी टू प्रिपेयर, यस और नो? सो वी कैन टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क क्वेश्चन. द फुल क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड, so we can take illustration 7 as a homework question. And also there was one more homework in illustration 6.
So illustration 6 में what was the homework? We need to prepare the capital accounts. Understood? Homework. Hello. Homework. Illustration 6, partners capital account. Illustration 7, the full question. Illustration 7 को अपने पूरा डिस्कस कर लिया. बैलेंस शीट नहीं बनाना है. Question has not asked, so we shall not also prepare. Now illustration 8. अच्छा मेरे को बताओ illustration 8 करने से पहले if the question is silent, if the question is silent with regards to the profit sharing ratio, then the profit sharing ratio will be equal 1:1. So old partners के बीच में 1:1, new partners के बीच में भी 1:1, and the sacrificing ratio will also be 1:1. Clear? So when the question is silent about profit sharing, means the question has no information with regards to old PSR, new PSR or sacrifice, then old PSR is 1:1, new PSR is 1:1, sacrificing ratio is 1:1. ठीक है, आ जाओ illustration 8 में आ जाओ. A and B are partners with capitals of rupees 7,000 each. Yani A's capital balance is 7,000, B's capital balance is 7,000. They admit C as a partner with 1/4 share in the profits of the firm. Okay. So C's share is how much? 1/4. क्या A और B के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ है? नहीं. तो A और B के बीच में ओल्ड PSR 1:1. And C is admitted for 1/4 share in the profits. So balance remaining share is 3/4. ये 3/4, ये 3/4. A और B बांटेंगे between themselves in what ratio? 1:1. So 3/4 का हाफ A को जाएगा, 3/4 का हाफ B को जाएगा. यानी after admission of C, listen, after admission of C, the relative ratio between A and B, only between A and B, is 1:1. Relative ratio between A and B is 1:1. समझ में आया ना? Question has not given any information with regards to profit sharing between A and B. So it is equal. That is 1:1. C is admitted as a partner for 1/4 share. So C is getting 1/4 share. So the balance remaining share after C's admission is 3/4, which will be apportioned divided between A and B in the equally in the ratio 1:1. So after admission of C, the relative ratio between A and B will be 1:1. So केवल A and B का comparison करो. A and B के बीच में old PSR was 1:1. A and B के बीच में the new PSR, only between A and B, the relative profit sharing between A and B is 1:1. So the sacrificing ratio between A and B will be 1:1. You can calculate and check. Understood? Clear है ना? क्योंकि A and B के बीच में the relative ratio between A and B after admission of C continues to be 1:1. So the new PSR between A and B only is 1:1, and their old PSR was 1:1. So the sacrificing ratio between A and B will be 1:1. Clear है? Okay. C brings rupees 8,000 as a share of capital. C का share is 1/4. And for 1/4 share in the profits, C brings rupees 8,000 as his capital. Give the journal entry to record goodwill. So goodwill का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले we need to find out
The value of goodwill of the firm. वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए यूनिट 2 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमने कौन से मेथड्स को डिस्कस किया था? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। बट इन चारों मेथड में से किसी भी एक मेथड के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन चारों में से कोई भी एक भी मेथड को यूज करने लायक इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में? आंसर इज नो। So question does not have any information. So question does not have any information that we can use to apply these methods for valuation of goodwill. So what to do? When we cannot apply the normal methods for valuation of goodwill, we shall apply the method of hidden goodwill. So this is a question of hidden goodwill. जब नॉर्मली हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड, वी नीड टू फाइंड आउट द हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल कैसे निकाला जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। न्यू पार्टनर इज सी, his share of profit is 1/4 and capital contribution is 8,000. So on that basis, the total capital of the firm should be 32,000. 8,000 divided by 1/4 is equal to 8,000 into 4/1 is equal to rupees 32,000. But what is the amount of actual capital employed? A and B 7,000 each means 7,000 plus 7,000 14,000. C का कैपिटल 8,000 ऐड कर दो, 14,000 प्लस 8,000 इज 22,000. 20,000 actual capital employed is 22,000. But on the basis of C is a share of profit and capital contribution, the total capital employed should be 32,000, whereas it is actually only 22,000. So the actual capital employed is lesser by rupees 10,000. तो इसका रीजन क्या हो सकता है? Existence of goodwill. So goodwill is equal to rupees 10,000. So 10,000 is the value of goodwill of the firm. 10,000 is the value of the goodwill of the firm. That is hidden goodwill. And C's share in the profit is 1/4. So C's share of goodwill is 10,000 into 1/4 is equal to rupees 2,500. C's share of goodwill is 2,500, which C will compensate to A and B. And what is the sacrificing ratio between A and B? 1:1. तो A को जाएगा 2,500 का 1/2 is 1,250 and B को भी 1,250. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए क्या लिखा हुआ है इसमें? गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। अब बताओ, क्या सी अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आ रहा है? यह एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। आंसर इज नो, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। नोवेयर इन द क्वेश्चन it is mentioned that C brings his share of goodwill in cash. It is only given that C brings rupees 8,000 as a share of capital. So 8,000 is for capital. Yani C is not able to bring his share of goodwill in cash. So in that case, how shall we treat goodwill? Through capital adjustment. So अपने goodwill का treatment through capital adjustment करेंगे. So entry will be gaining partner's capital account debit to sacrificing partner's capital account. Who is the gaining partner? The new partner C. So C's capital account debit. Who is the sacrificing partner? A and B, the old partners. So A's capital account credit, B's capital account credit. So entry is C's capital account debit
to A's capital account to B's capital account. C's capital account debit 2500 to A's capital account 1250 to B's capital account 1250. आई बात समझ में? क्लियर है? Yes or no? So the solution is very clearly given in the illustration itself. So you can refer the solution and do it. Practice, self-practice. Take it this question also as a homework. Clear? So hidden goodwill का calculation करके अपने को capital adjustment का entry pass करना है for treatment of goodwill. So illustration 8 को भी हमने पूरा discuss कर लिया. It should be taken as a homework question. Okay? So आज अपने कौन से illustrations को solve किया illustration 5, 6, 7, 8 ये 4 illustrations आज अपने क्लास में solve किए. How many illustrations are left to solve? 9, 10, 11. 3 illustrations are left which we shall take up in the next class. Okay then. आज के लिए इतना ही. Thank you so much and bye. Take care. Bye. Illustration 9. A and B are in partnership, sharing profits and losses equally. So the ratio is 1:1. The balance sheet of Messrs. A and B as on 31st December 2022 was as follows. So 31st December 2022 का बैलेंस शीट अपने को दिया हुआ है. लाइबिलिटीज के साइड में ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ए के कैपिटल में 45,000, बी के कैपिटल में 45,000, यानी कुल मिलाकर 90,000 का कैपिटल बैलेंस है बिफोर एडमिशन. ठीक है, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का टोटल कैपिटल बैलेंस इज 45 प्लस 45 90,000. On 1st Jan 2023, they agreed to take C as 1/3 partner. So C is the new partner who is admitted into partnership for 1/3 share in the profits. ठीक है, तो C's share of profit is 1/3. To increase the capital base to rupees 1,35,000. तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि सी का एडमिशन हो रहा है फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स. यस. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होने से क्या होता है? बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज होता है. दे अग्रीड टू टेक सी एज 1/3 पार्टनर टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू रुपीज 1,35,000. So C के एडमिशन के बाद द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जिसमें A, B एंड C तीनों होंगे. सो तीनों पार्टनर्स का टोटल कैपिटल बैलेंस शुड बी रुपीज 1,35,000 आफ्टर C's एडमिशन. टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू रुपीज 1,35,000, यानी सी के एडमिशन के बाद द कैपिटल बेस इज टू इंक्रीज टू रुपीज 1,35,000, यानी एडमिशन के बाद ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर्स का टोटल कैपिटल बैलेंस शुड बी रुपीज 1,35,000. अब देखो, एडमिशन से पहले ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो कितना है. 90,000 है. एडमिशन से पहले 90,000 और एडमिशन के बाद कैपिटल बेस को इंक्रीज करके कितना करना है? 1,35,000 टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू रुपीज 1,35,000, यानी ये 1,35,000 ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलाकर टोटल कैपिटल बैलेंस शुड बी रुपीज 1,35,000, जिसमें से ए एंड बी का कितना है? 90,000.
यानी सी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन शुड बी 45. 45,000. 1,35,000 minus 90,000 is equal to rupees 45,000. So C's capital contribution should be rupees 45,000. Okay. बट आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सी अग्रीज टू पे रुपीज 60,000. सो सी को कितना देना है? रुपीज 60,000. बट सीज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी रुपीज 45,000 बिकॉज Yes. एडमिशन के बाद द टोटल कैपिटल बैलेंस ऑफ ए बी एंड सी को 1,35,000 करना है, जिसमें से ए एंड बी का पहले से 90,000 है, तो बाकी बचा 1,35,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू 45,000. वो सी का कैपिटल होना चाहिए. हाँ. बट सी एडमिशन के टाइम कितना पेमेंट करने को तैयार हो गया? रुपीज 60,000. यानी एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं. एक्स्ट्रा मतलब प्रीमियम. दिस इज Yes. व्हाट? प्रीमियम फॉर Not for goodwill. गुडविल. 15,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं. एक्स्ट्रा Yes. पैसा मतलब प्रीमियम. सो दिस अमाउंट Yes. इज प्रीमियम फॉर गुडविल. So 15,000 is premium for goodwill, right? So C agrees to pay 60,000. So 60,000 में 45,000 is C's capital contribution and 15,000 is premium for goodwill. ठीक है? तो C brings his share of goodwill in cash. ये Yes. वही हुआ ना जिसको A और B आपस में बांटेंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Yes. क्लियर? क्या लिखा हुआ है? शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, तो अपने एंट्रीज पास करते हैं. सबसे पहले फॉर सीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट डेबिट. सारे कैलकुलेशंस हम दिखा देंगे, आपको समझ में आए कैसे हाँ. करना है. हाँ. तो ये कैलकुलेशंस लिखकर दिखा देना. ठीक है. सो फॉर सीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 45,000 45,000. Yes. प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. Yes. अब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? बोलो 1:1 बिकॉज Yes. ओल्ड पीएसआर इनका 1:1 है. हाँ. एंड क्वेश्चन में न्यू पीएसआर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. इन दैट केस ओल्ड पीएसआर इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी. So which Yes. is 1:1. So 1:1 मतलब 15,000 का हाफ हाफ 7,500 7,500. So bank account debit 15,000 to A's capital 7,500 7,500 to B's capital 7,500. बट खुद सोचो, ये वाला एंट्री पास करने के बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, ये एंट्री पास करने के बाद तो ए और बी का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा हाँ. बाय 7,500 ईच. यानी टोटल कैपिटल 15,000 से इंक्रीज हो जाएगा. Yes. बट अपने को टोटल कैपिटल को 1,35,000 ही मेंटेन करना है. Yes. सो 1,35,000 मेंटेन करने के लिए क्या करना है? बोलो. रिवर्स एंट्री पास कर देंगे. करेक्ट. उन लोग गुडविल का जो पैसा आया है उसको विड्रॉ कर लेंगे. ए और बी शैल विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल. So A's capital account debit 7,500, B's capital account debit 7,500 to bank 15,000. मतलब इन लोग गुडविल का पैसा को बिजनेस में से निकाल लेंगे. क्लियर है? Yes. सो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल वो 60,000 लेकर आ रहे हैं इन टोटल. फिर अपने 15,000 का कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं. इसको आप अदरवाइज कैसे कर सकते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 45,000 देन बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू एस कैपिटल 7,500 टू बीस कैपिटल 7,500. है ना? एक ही चीज है तो. हाँ.
क्लियर। देन ए एंड बी अपना गुडविल का पैसा को बिजनेस में से विड्रॉ कर रहे हैं। कैलकुलेशन इधर में दिया हुआ है, जिसको आप देख लेना, समझ में आ गया। इसी तरीके से अपने को एग्जाम में भी कैलकुलेशंस को शो करना है, एंड देन वी कैन इजीली प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस। क्लियर है? हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो हाँ। इलस्ट्रेशन 9 कैन बी टेकन एज होमवर्क क्वेश्चन जब पूरा यस। सॉल्व करोगे विथ वर्किंग्स। Illustration 10, Lena and Meena were in business, sharing profits and losses on the ratio 2:3। ठीक है, सो बैलेंस शीट अपने को दिया हुआ है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है 40,000 का, जिसको यस। हम लीना एंड बांट मीना के देंगे बीच में ओल्ड ओल्ड बांटेंगे। पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो। करेक्ट, इन ओल्ड पीएसआर, वेरी गुड। On 1st April 2022, they decided to admit Nina into partnership, giving her a 1/5 share in future profits. So Nina is the new partner admitted into partnership, and her share is 1/5. She brings in rupees 80,000 as her capital. Capital contribution is rupees 80,000. Goodwill was valued at rupees 1 lakh. बोलो, ये goodwill of the firm है या फर्म का नीना गुड से share of goodwill है? फर्म का गुडविल है। फर्म का goodwill है। सो इसमें नीना का शेयर कितना होगा? इंटू 1 वन लाख बाई का फाइव 1/5 is equal to ट्वेंटी rupees थाउजेंड 20,000. Clear? So this is Nina's share of goodwill. क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन्ड नहीं है कि नीना ब्रिंग्स इन हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का एंट्री पास करेंगे। नीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू लीनास कैपिटल अकाउंट टू मीनास कैपिटल अकाउंट। यस। क्लियर? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में न्यू पीएसआर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, सो इन दैट केस द ओल्ड ओल्ड रेशियो रेशियो इज कैपिटल। is a sacrificing ratio between Lena and Meena. So 2:3 के रेशियो में बांट देंगे। Clear? The partners decided to revalue the assets as follows. ये revaluation करना है, ठीक है, अपने बुक वैल्यूज जो बैलेंस शीट में दिया हुआ उससे कंपेयर करके रिवैल्यूएशन को करेंगे। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यूएशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट अपने को प्रिपेयर करके देना है। क्लियर? इजी है क्वेश्चन, यस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो हाँ बी सर। टेकन एज होमवर्क completely. So next question and the last question of this chapter, illustration 11. Alpha and Beta were partners in a LLP, namely Metachem LLP, sharing profits and losses equally 1:1. बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है जो अल्फा एंड बीटा के बीच में अपने बांटेंगे इन द ओल्ड रेशियो। दे अग्रीड टू एडमिट ग्यामा as partner from 1st April 2022 on the following terms. Gamma shall have 1/6 share in the profits, 1/6 उसका share of profit है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 3:2:1। इसमें एनपीएसआर दिया हुआ है तो अपने को सैक्रिफाइस निकालकर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। ग्यामा शैल ब्रिंग रुपीज 2,50,000 एज इज कैपिटल। Goodwill of the firm is valued at rupees 3 lakh. So Gamma's share of goodwill is 3 lakh का 1/6, 50,000। कहीं पर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि Gamma brings in his share of goodwill, तो अपने गुडविल का कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। Gamma's capital account debit to Alpha's capital account to Beta's capital account। 5 में factory building is to be appreciated by 20%. Inventory is revalued at 70,000. So 70,000 इन्वेंट्री का रीवैल्यूड अमाउंट है। बुक वैल्यू से कंपेयर करके अपवर्ड डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन निकालकर रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसके इफेक्ट को दे देंगे। राइट? 6 में मशीनरी टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, ऑफिस फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट रुपीज 50,000, अगेन रीवैल्यूएशन।
7 में ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स रुपीज 3210 आर बैड, तो ये बैड डेट्स है। इसके लिए yes, क्या एंट्री पास होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स 3210, yes, यानी ये बैड डेट का लॉस को अपने को राइट ऑफ कर देना है। सो डेटर्स में से इसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, यानी डेटर्स एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इट्स अ लॉस, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 3210। सो yes, बैड डेट का लॉस को राइट ऑफ करने के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स का रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा? 1,40,000। यस और नो? yes, बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स 1,43,210 का दिखाई दे रहा है, हाँ, एंड बैड डेट हुआ है 3210 का। yes, तो बैड डेट का लॉस को माइनस, बैड डेट का अमाउंट को माइनस करने के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस अमाउंट 1,40,000 बचा। हाँ, 5% बी प्रोवाइडेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सो 1,40,000 का 5% निकालो, कितना होता है? 7,000, 7,000 का अपने प्रोविजन क्रिएट करेंगे। revaluation account debit to provision for bad and outfielders, 7,000। अब बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स इनर कॉलम में 1,43,210, उसमें से पहले लेस करेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना? 3,210 करके रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 1,40,000। इसके ऊपर हम प्रोविजन प्रोविजन क्रिएट करेंगे एट द रेट ऑफ 5%, 7,000 का, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 7,000 करके आउटर कॉलम में 1,33,000। ओके, yes, नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट 8 में देर इज नो एक्चुअल लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन। वर्कमैन के रिस्पेक्ट में कुछ दिया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 60,000 का है, हाँ, ठीक है। सो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के लिए क्या दिया हुआ है नीचे में? देर इज नो एक्चुअल लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन, यानी ये लाइबिलिटी को हटा देना है, हाँ, ठीक है। इसका काम है या नहीं? अभी इसका काम नहीं है, आगे एडमिशन के बाद इसका काम नहीं पड़ेगा। तो देर इज नो एक्चुअल लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड होता क्या है, पहले वो बताता हूं, एंड देन इसका ट्रीटमेंट क्या करना है डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, फैक्ट्री में जब वर्कर्स लोग काम करते हैं तो काम करते करते उनको कहीं कहीं कभार चोट लग जाती है। तो क्योंकि काम करते वक्त चोट लगा तो उसका पैसा बिजनेस एंटिटी को ही भरना पड़ेगा, बिकॉज उनको काम, क्योंकि काम इतना जोखिम का होता है, जैसे कोल माइंस वगैरह, काम इतना जोखिम का होता है, तो काम करते करते लग सकती है, ठीक है। तो उन लोग रिस्क लेता है वैसा, जो वर्कर्स है। तो जब लगेगा वर्कर्स को, तो ये पैसा कौन देगा? मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन करेगा? वर्कर्स को कौन, कॉम्पेंसेट कौन करेगा? कौन, बिजनेस एंटिटी करेगा, पार्टनरशिप फर्म करेगा इन दिस केस, ठीक है। तो लगा है तो चोट को ठीक करने का मेडिकल एक्सपेंसेस का कंपेंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस का कंपेंसेशन विल बी पेड बाय द बिजनेस एंटिटी, इन दिस केस पार्टनरशिप बिजनेस। तो उसी के लिए पहले से एक फंड क्रिएट करते हैं, यानी उसमें पैसा जमा करते हैं, यानी प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा को निकालकर फंड में डालते रहते हैं, जिससे कि जब भी कोई वर्कर को पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन आए, यानी वर्कर को अगर चोट लग गया तो फर्म को उसको पेमेंट करना है, तो इन yes, दैट केस फर्म फंड में से रुपया निकालकर उस वर्कर को दे देता है। तो फर्म को पता है कि फर्म का जो बिजनेस का काम है, जो ऑपरेशंस है, वो बड़ा ही जोखिम वाला है, जिसमें वर्कर्स को लग सकता है, और अगर वर्कर्स को लगा तो फर्म को ही उसका मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कंपेंसेशन देना पड़ेगा, और लगने के कारण वो 2-3 महीना नहीं भी आएगा तो वो भी कंपेंसेशन उसको देना पड़ेगा, ताकि वो अपना रोजी रोटी चला सके। तो जो भी है, तो फर्म क्या करेगा, फर्म को पता है किस तरीके का बातचीत हो सकता है, तो फर्म इसके लिए पहले से एक फंड क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। फंड में क्या करेगा बिजनेस फर्म,
थोड़ा थोड़ा पैसा प्रॉफिट में से हर साल, प्रॉफिट में से हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर फंड में डालते जाएगा, जिससे कि जब भी कोई वर्कर को पेमेंट करने का नौबत आए, वर्कर को चोट लग गया, उसको पेमेंट करना है, तो वो फंड में से पैसा निकालकर दे देगा। तो फंड का काम ये होता है। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन, यानी एज सच अभी वर्कमैन को कुछ पे करने का ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ऑब्लिगेशन नहीं है तो फंड का भी जरूरत है नहीं। तो फंड में जो 60,000 है उसका क्या होगा, बोलो? पार्टनर से बांट देंगे। ऑल पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, बिकॉज फंड में जो पैसा है वो कहां से आया? प्रॉफिट में से पार्टनर्स के निकाल पास कर। प्रॉफिट। करेक्ट। जैसे अपने प्रॉफिट में से निकालकर जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं, वैसे ही प्रॉफिट में से निकालकर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्रिएट करते हैं। जनरल रिजर्व का हमने क्या किया? पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिमिलरली वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का रुपया भी हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? बिकॉज ये फंड यस। क्रिएट कैसे हुआ? प्रॉफिट में से क्रिएट हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ। तो जनरल रिजर्व का जो ट्रीटमेंट हमने किया, सेम ट्रीटमेंट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का भी होगा, क्योंकि फंड अभी जरूरत नहीं है। तो फंड का रुपया हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे इन ओल्ड पीएसआर। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यही एक पॉइंट है जो थोड़ा समझने लायक था, हटकर था। तो इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट के साथ साथ बैंक अकाउंट भी रेडी करके देना है, तो आप वो करना, बैंक एक लेजर अकाउंट बनाना है, दैट इज इट। क्लियर? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वाला ट्रीटमेंट थोड़ा हटके था, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया। बेसिकली उसको जनरल रिजर्व की तरफ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पीएसआर में बांटने का काम ही करना है। क्लियर है? तो ये एडमिशन ऑफ अ डाउट था। पार्टनर। हाँ बेटा। अगर ये बस एक डाउट था, अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का लायबिलिटी 20,000 रहता तो 40,000 बांटते ओल्ड पार्ट। करेक्ट, करेक्ट। यानी आप कहना चाहते हैं कि सपोज अगर वर्कमैन कंपेंसेशन का लाइबिलिटी अपने एस्टिमेट करते 20,000 का, और फंड में कितना पड़ा हुआ है? यस सर। 60,000। तो अपने 55 40,000 क्या करते फिर? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देते, ओल्ड यानी पार्टनर 40,000 बांट का जरूरत नहीं तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पीएसआर में बांट देते। देते। ठीक है, ठीक है। सो एडमिशन का ये लास्ट इलस्ट्रेशन था। इसी के साथ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाता है। सो ये तीन क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 9, 10 एंड 11, अपने को पूरा रिटन प्रैक्टिस सॉल्व करना है। ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट विथ a new unit in partnership accounts, which is new unit in partnership accounts, which is retirement of a partner. Okay, ठीक है। समझ में आज का क्लास क्लियर है? ओके। ओके, चलो देन आज के लिए इतना। हाँ थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।